Hi everyone, I'm Rocky and I'm back with another question of chapter number 10 S block elements. In this video, I will be explaining you question number 29 and it's on page number 306. It's class 11 NCERT text. So let's begin with the question first and then toward the solution. Question is, how would you explain the following observation? Number 1, beryllium oxide is almost insoluble but beryllium sulfate is soluble in water. Barium oxide is soluble but barium sulfate is insoluble in water. Lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol. So let's begin with the explanation of the first part of this question, in which they have asked कि beryllium oxide जो होता है it is insoluble but beryllium sulfate is soluble in water. ठीक है, so beryllium oxide is insoluble but beryllium sulfate is soluble in water. You can see कि जो beryllium oxide लेती हूँ पहले, तो beryllium oxide के जो ions हैं वो किस तरह के हैं? beryllium 2 positive and O2 negative. That means beryllium 2 positive is a small cation which is having high polarizing power. beryllium 2 positive एक small cation है और उसकी polarizing power बहुत ज्यादा high है. अब आते हैं O2 negative anion पे. O2 negative anion जो है वो एक small anion है. तो अब देखिए बेरिलियम 2 पॉजिटिव कटायन एंड O2 नेगेटिव अनायन दोनों के दोनों छोटे हैं साइज में. दैट मींस देयर साइज कंपैटिबिलिटी इज वेरी मच हाई. सो द लैटिस एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड इज वेरी मच हाई. ठीक है, अब देखते हैं आगे. जब बेरिलियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड की हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कम होती है कंपैरिजन टू द लैटिस एनर्जी. इन अ वे वी कैन से कि हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट एबल टू ओवरकम द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब बेरिलियम ऑक्साइड का जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है कंपैरिजन टू द हाइड्रेशन एनर्जी. देयरफॉर बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, कमिंग टू द बेरिलियम सल्फेट. बेरिलियम सल्फेट में क्या है? मेरे पास स्मॉल कैटायन है Be2 पॉजिटिव हैविंग अ हाई पोलराइजिंग पावर, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास है सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन जो बहुत लार्ज अनायन है. तो अब मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव कैटायन कैन इजीली पोलराइज द लार्ज साइज्ड अनायन दैट मींस सल्फेट अनायन. ठीक है, तो अब जो बेरिलियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ है वो एक तरह से अनस्टेबल फॉर्म हुआ है एज बिकॉज द लैटिस एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम सल्फेट इज वेरी मच लो. ठीक है, क्योंकि इनकी साइज कंपैटिबिलिटी थोड़ी में डिफरेंस साइज कंपैटिबिलिटी में, लेकिन देखा जाए तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव बहुत इजीली पोलराइज कर रहा है सल्फेट आयन को. ठीक है, हेंस द लैटिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम सल्फेट इज लो. अब हम बेरिलियम सल्फेट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है बेरिलियम सल्फेट की वो ओवरकम कर जाती है लैटिस एनर्जी को. एक तरह से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू द लैटिस एनर्जी. Therefore, barium sulfate is soluble in water. Now have a look over here. Beryllium oxide is almost insoluble in water and beryllium sulfate is soluble in water. Beryllium 2 positive is a small cation, while small cation with high polarizing power, and O2 negative is a small anion. The size compatibility of beryllium 2 positive and O2 negative is very much high. Therefore, the lattice energy released during their formation is also very high. When beryllium oxide is dissolved in water, the hydration energy of its ion is not sufficient to overcome the high lattice energy. आज मैंने आपको explain किया है. Therefore, beryllium oxide is insoluble in water. On the other hand, SO4 negative ion is a large anion. Hence, beryllium 2 positive can easily polarize SO4 negative ions, making beryllium sulfate unstable. Thus, lattice energy of beryllium sulfate is not very much high, and so it is soluble in water. Fine, so I hope it is clear कि बेरिलियम ऑक्साइड क्यों इनसॉल्युबल है और लेकिन बेरिलियम सल्फेट क्यों सॉल्युबल है वाटर में. ठीक है, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. देखिए बिल्कुल सेम रीजन है फर्स्ट पार्ट की तरह. बेरियम ऑक्साइड का देखते हैं हम. बेरियम ऑक्साइड के आयंस के हैं Be2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयन. जो बेरियम 2 पॉजिटिव आयन है वो बहुत लार्ज साइज्ड कैटायन है. दैट मींस बेरियम 2 पॉजिटिव कैटायन इज अ लार्ज साइज्ड कैटायन. और हम O2 नेगेटिव की बात करते हैं तो O2 नेगेटिव यहाँ पर स्मॉल साइज अनायन है, हमेशा स्मॉल साइज अनायन रहता है. तो देखिए साइज कंपैटिबिलिटी, एक हमारे पास लार्ज साइज्ड कैटायन है और एक हमारे पास स्मॉल साइज अनायन है. देयर मींस देयर इज द साइज कंपैटिबिलिटी ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इज नॉट मैच्ड. दैट मींस जब बेरियम ऑक्साइड फॉर्म अप होता है तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, इट इज वेरी मच लो. तो जब हम बेरियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं
मतलब इज वेरी मच हाई इन द सेंस दैट मीन्स, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल, तो बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सिंस देयर इज मिसमैच ऑफ द साइज compatibility between the barium 2 positive and O2 negative ion, therefore the lattice energy which is released is very much low. अगर हम बेरियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेरियम ऑक्साइड की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी कंपेयर करते हैं बेरियम ऑक्साइड की, तो हमें पता चलता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो बेरियम ऑक्साइड की है वो लार्ज है, हेंस बेरियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन हम बात करते हैं बेरियम सल्फेट की, वो जो है इनसॉल्युबल इन वाटर। वो कैसे है? देखिए, बेरियम 2 पॉजिटिव बहुत लार्ज साइज कैटायन है और ऑन द अदर हैंड SO4 नेगेटिव भी एक लार्ज साइज अनायन है। दैट मींस इन दोनों की साइज कंपैटिबिलिटी बहुत सही है। दैट मींस द what we say size compatibility of barium 2 positive cation and SO4 negative anion is very much high. Hence the lattice energy released during the formation of barium sulfate is very much large. तो अब हम जब बेरियम सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी जो बेरियम सल्फेट की है वो बहुत ही ज्यादा है कंपैरिजन टू द हाइड्रेशन एनर्जी। दैट मींस मैं ये कहूंगी कि बेरियम सल्फेट की लैटिस एनर्जी ज्यादा है कंपैरिजन टू द हाइड्रेशन एनर्जी, हेंस बेरियम सल्फेट इज insoluble in water. Now please have a look on the board. Barium oxide is soluble in water, but barium sulfate is not. Barium 2 positive is a large cation and O2 negative is a small anion. The size compatibility of barium 2 positive and O negative is not high. As a result, barium oxide is unstable. The lattice energy released during its formation is also not very large. It can easily be overcome by the hydration energy of the ions. Therefore, barium oxide is soluble in water. Comparison करते हैं बेरियम सल्फेट से। इन बेरियम सल्फेट Ba2 positive and SO4 negative are both large sized cation as well as anion. The lattice energy released is very much high, hence not soluble in water. Fine. So I hope the two parts regarding the question 29 is very much clear to you. Now we'll move on to the third part of the question. So now moving on to the third part of the question, in which we have to make explanation regarding lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol. Fine. So देखिए lithium ion जो है it is much smaller ion comparison to the potassium ion. ठीक है. So according to Fazan's rules we can say that lithium ion can polarize the bigger iodide anion in comparison to the potassium ion. ठीक है. तो लिथियम जो मेरे पास कैटायन है वो इजीली पोलराइज कर देगा बिगर आयोडाइड अनायन को कंपैरिजन टू द पोटेशियम कैटायन. ठीक है. हेंस वी कैन से कि लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट in comparison to the potassium iodide, and hence lithium iodide is soluble in organic solvents like ethanol. Now please have a look on the board. Li positive is much smaller than potassium ion. According to Fajans rules, lithium positive ion can polarize bigger ion negative an ion to a greater extent than potassium ion. As a result, lithium iodide is more covalent than potassium iodide and hence is more soluble in organic solvents like ethanol. Fine, so I hope these three parts of the question is very much clear to you, but still if anybody is having any doubt regarding any point of the question, then please, you all are welcome with your doubts. Do write your doubts in this space given below. Fine, do watch the next video for the next question of this chapter. Do subscribe us. And this is me, Rakhi, saying you all goodbye.